against him, and in particular in Kashmir, on the work we've done together in Kashmir. He has been a huge support and help in that particular area. मैं इंतहाई मशकूर हूँ गवर्नर साहिब का, जो इनकी तारीखी काविशें और कोशिशें पाकिस्तान के लिए GSP प्लस के हवाले से 2013 से ये जंग लड़ रहे हैं, ये जिद्दोजहद कर रहे हैं ये कश्मीर के लिए भी, और बिलखसूस GSP प्लस जितनी एनर्जी लेवल्स ये लेकर आए हैं, जब भी आए यूरोपियन पार्लियामेंट, और इनके साथ मुझे मौका मिला है काम करने के लिए। मैंने देखा है बहुत कम लोग देखे हैं जिस इंटेंसिटी से, जिस जज्बे के साथ और एहसास के साथ कि पाकिस्तान के लिए वो काम करते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। और आज जो आने वाले वक्त में मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ सर आप वापस आएँ यूरोपियन पार्लियामेंट। आपका तजुर्बा, नॉलेज, स्किल्स जो है आपके पास, ये बहुत कम लोगों के पास होती है। वो आएँ और जो GSP प्लस रिव्यू के हवाले से प्लीज़ कंटिन्यू योर वंडरफुल एफर्ट्स। थैंक यू वाजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परवेज़ लोसर है। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप का चेयरमैन हूँ, जो कि यूरोप के 28 मुल्कों में। फाबियो कस्ट्राडो, ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड ऑफ द पाकिस्तान एंड कश्मीर का। आई वेलकम टू हिम इन माई होमलैंड एंड दिस इज़ माई ड्रीम टुडे इज़ कम्प्लीट। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ, चोई मोहम्मद सरवर जिस बंदे का नाम है, आप लोग को सबको पता है, ये पाकिस्तान का वो बेटा है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में था तो ये पहला मुसलमान पार्लियामेंटेरियन हाउस ऑफ कॉमन में बना, और 2013-14 में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में था हूँ और इंशाल्लाह इस वतन माँ के हम सफ़ीर हैं, रहेंगे। चोई साहब ने उस वक़्त ये लेना, स्टेटस GSP प्लस लेना बहुत मुश्किल था। 1-2 दिनों में 200 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरों को ये मिले थे। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, और ये भी आप लोग यहाँ हैं, ये गवर्नर का पोर्टफोलियो नहीं है, ये बीइंग है सिर्फ पाकिस्तान का बेटा होने के नाते। और अभी ये जो 2-3 वीक पहले यूरोपियन पार्लियामेंट में गए, आपको मैं ये बताऊँ, 2 दिन में यूरोपियन पार्लियामेंट में 15 किलोमीटर इन्होंने वॉक की। और जो लोग सालों में मीटिंगें नहीं करती, 1.5 डे में वो हमने 36 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकातें की, जो कि अफेक्टिव मेंबर हैं, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। और ये जो फाबियो कस्ट्राडो मासिमो जो है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट का सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट है। और इसकी जो सोच है पाकिस्तान के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, या कश्मीर की हेयरिंग के ऊपर, अभी हमें इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाना है। चोई सरवर जैसे लोग जो हैं, ये पाकिस्तान का असासा हैं। ऐसे लोगों को हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भेजकर अपना और कश्मीर का केस लड़ने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के मजाज को समझते हैं, इनको मिलने के लिए वो टाइम भी देते हैं। हमें अपना टाइम ज़ाया किए बग़ैर, मेरी आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक रिक्वेस्ट है, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट हो, चौधरी साहब को जनवरी में दोबारा भेजें। इस बार जो हमारा हमसाया है वो मकार भी है, अयार भी है, और ऑर्गेनाइज होकर हमारे पास खिलाफ कैंपेन कर रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द को हमें रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा, और जाने के लिए ऐसे लोग हैं जो उनका मजाज समझते हैं। इंशाल्लाह चोई साहब जो कोशिश कर रहे हैं, अभी बड़े जल्दी आप सुनेंगे कि इंशाल्लाह दोबारा हमने GSP प्लस का स्टेटस लेकर इसी हाल में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान कामयाब होगा तो हम सब कामयाब हैं, क्योंकि हमारी एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमारे मसला कश्मीर के लिए, हर चीज़ के लिए पाकिस्तान का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान की जो 10 सालों में, जैसे कि मसीमों ने कहा, 70 हज़ार शहादतें हैं, ये हमें इंटरनेशनल लोगों को बताना है। आप जो है मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट किसी मुल्क कौम का स्तून होता है। आपका किरदार भी अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करें, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। सवाल एक आध अगर है तो जी। Well, I will answer what I answered to some young people I invited in the European Parliament in my capacity of Vice President for Human Rights
and also as responsible for the Young Leader program many years ago. They were young persons, young leaders coming from Palestine and coming from Israel. They say, what, in your opinion, is the worst enemy for peace between our two countries? And I say, the worst enemy for you is to surrender to the status quo, to the idea that nothing will change, that there is no hope, there is no space for dialogue. I know very well what is the difficulties, and what I always stressing to my European colleagues is that we do not have to teach lessons to anybody else. We have been the continent with the highest number of wars and scars from wars in the history probably, but what we have to try to do is to foster education and culture to the promotion of the values in which we believe. If we are not building up now, today, the citizens of the future, of course this process will not see any new wind, any new direction. And in my opinion, the way in which we can deliver greatest results exactly is to focus also not just in negotiation between the states that are fundamental, of course, to have a real way through and to have a real program and roadmap, but also on the other side to foster the efforts on education for the young generation in this regard. It's how, for example, Germany and France solved their such a long conflict of centuries, a millennium of fights between them. They have exchanging programs on one side and another, young diplomats that are going to continue their careers in Germany from France, and in France for Germany, mutual exchange of schools since they are children. This is something I think that can be part of the complex puzzle that we need to solve such a long crisis as the conflict and tensions between Pakistan and India and on one side, and Palestine and Israel on the other side. But to achieve that, we need real commitment from both sides. We have to break prejudice, and we have to break these difficult ice, of course, of the hostility to which some generation have been rising up by both sides. And I think that to get this, we need good steps, as I told you, concrete, real steps. That's why I said before that this modification of Article 70 is not going into the right direction, because on the contrary, is increasing fostering tensions in a moment in which we need, on the contrary, to promote the culture of dialogue. Aslam. Thank you very much, Mr. Vice President. Visit to Pakistan. I hope you will enjoy your visit with the hospitality of Punjab. Pakistan is facing a very tough situation for the last few years due to law and order situation, due to suicide attacks, and Can you speak with that microphone, because there is a lot of them? Pakistan is facing a very tough situation during the last few years due to war on terror and especially suicide blast. Now we are a little relaxed, but at the same time on line of control, we have a tough situation with India. On daily basis there is an exchange of fire on both sides. So we think that European Union can play a role to reduce this tension situations between the states. First of all, let me say that the hospitality I received from the governor server is simply amazing, and I'm deeply honored the way in which I've been hosted, not just as a good friend, but I would say brother and as an excellent friend of Pakistan. So really thank you very much once more, dear Governor, for your invitation and your hospitality. Yes, you can play a role, can play an effective role. It's not a secret for anybody the difficult situation Pakistan was obliged to leave, also because let's not forget that you still have war at the other border, at the western one, because the situation in Afghanistan is continuing to be very unstable, with a lot of internal fights, terrorism, and terrorism unfortunately do not have any will to respect borders and to respect the commitment that normally are obliged with the counterpart states and third states. We know how it has been difficult to secure this border, and how many efforts from not just from economic but from the human life point of view
Pakistan was obliged to deliver and to suffer. But nevertheless, of course, we are also totally aware of the fact that there are tensions also in the eastern part. We always said that nobody can choose his neighbors. In a certain point of view, we are all committed and we are all forced to do our best to live together with them in good peace. And I think that the EU, of course, if it will be called to that, because we have a huge respect of our counterparts and our friends, we have a huge respect of our friends from Pakistan, we have a huge respect of our friends from India. If you will call us to play the role, to facilitate the dialogue, to be a good mediator, a mediator in good faith, that is not a mediator that do not want to play and to promote any personal agenda, but just to stick to the values that made possible our integration at the regional level, then of course our support and our expertise and know-how in the field of human rights, in the field of mediation negotiation, in the field of capacity building and peace process can be one other part of this very delicate puzzle. Nobody is saying here that we can sell easy solution, because there aren't any easy solution for very complex problems. But of course, we are ready to deliver if just you want it, and maybe to help to create a roadmap, as I said before, a roadmap that will be done of small steps but significant ones. The importance that what the new generation would like to see is that there is a process. Small steps, but going ahead. Instead of waiting for a very big framework and agreement that will be difficult to negotiate. But with these small steps, we will maybe properly create the ground that we need to find a comprehensive and final solution for the status of Kashmir, and that will ensure all the people of Kashmir that are the most important part of that, because they are the weakest part, unfortunately, of this crisis, to finally live in peace and to finally grow up their children in their family in a safe context with the total respect of their right to have a human life. How much Pakistan is close to getting the target of GSP plus, as we said, it's very important for Pakistan and our economic growth. Do you think the efforts Mr. Saror is going on is enough for this, or you guys, and especially when India has a very strong lobby in European Parliament at the same time, how do you believe and how much you think it's easy for us, and how much more effort government of Pakistan and Parliament should take us? Of course, nothing is given by default, and we have to work very hard in this regard to get this success. But let me say that for what happened in the last years, for the achievement of the status of GSP Plus, some years ago, we are speaking about a success story, as I said, that improved the quality of work and the life of people in Pakistan, create and foster new jobs, create a lot of occasion in which especially the poorest people can enter finally inside the labor market and can get back their dignity and their will to be part of the society. And so, starting from this success, we have a very solid base and ground to lead this negotiation to a good success. We will work very hard in that. The governor told me this is really his first goal in this moment. He wants to continue show the commitment that he showed during the last years, and I will be really honored and glad to be beside him to facilitate the dialogue. As you can imagine, the European Parliament is a very complex body. We have 7 different political families. We have delegations from 28 soon. Unfortunately, 27 member states. I'm sorry for that, dear Wajid, but unfortunately that's what happened with the last election. But nevertheless, we hope to see you soon again, maybe in a few years, inshallah. And of course, what is important again is mediation and dialogue. We need to put on the table the success of that agreement. We have to show data's
so everybody will be able to create its own analysis in good faith, and we are positive and we believe that with the hard work and commitment we will achieve a much more ambitious agreement on the respect of labor standards and conventions, but also in promoting this very mutual and beneficial trade relationship we fostered during the last years. Last question. As you said that Governor Punjab has a mission at European Parliament and he did lobby with 36 parliamentarians. So do you think that is enough on behalf of Pakistan, or we need to do more for the GSP Plus status? Of course, anytime His Excellency, the Honorable Governor, will come to visit us, it will be for me a huge pleasure to host him again and to continue this exchange. What really pays back normally in the relationship with the European Parliament is to be constant. So to try to create exchange that time by time are going ahead, and of course with the mutual missions from one side and to the other. So I already committed myself to come back again to Pakistan soon in the forthcoming months to have a meeting also with the Prime Minister and the President of the Republic and to continue strengthen these ties. And I think that already the mission that has been done by the Honorable Governor was a pillar for this strategy to create the good ground for the negotiation for the GSP+. It has been very appreciated by multiple MEPs and that are belonging to different families, and we have to continue exactly in this way to have to imagine also a new visit and a new mission to continue strengthen and to go into that positive vibe and direction. We are confident. We know that we have a hard work in front of us, but we are confident. हाँ, देखें बात यह है कि वहाँ पर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है जनवरी के तीसरे हफ्ते में पेश करनी है। वो रिपोर्ट कितनी क्रिटिकल होगी, उसमें क्या इश्यूज़ वो उठाएंगे, तो उसके बाद इंटा कमेटी के पास जाएगी जो कि ट्रेड कमेटी है, और ट्रेड कमेटी में उस पर बहस होगी, उसके बाद फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में वो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 27 कन्वेंशंस हैं, हम ये बात जो हैं तमाम यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट करते हैं कि वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। ये हम नहीं कह सकते कि हमने तमाम जो 27 कन्वेंशन हैं उनको 100% इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये चीज़ें करने में टाइम लगता है। ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, लेबर कन्वेंशन हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ पे पाकिस्तान जो है उन पे अमल करने के लिए जो हमने कन्वेंशन एक्सेप्ट किए थे उन पे पूरी मेहनत से काम कर रहा है। लेकिन हमारा इशू ये है कि हमारे बदकिस्मती से मुखालफ हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है ऑर्गेनाइज भी हैं, वो मतलब लॉबी भी करते हैं, तो हमें इस पे कॉशियस रहना है। लेकिन इंशाल्लाह वी हैव मैनी फ्रेंड्स। पिछली दफ़ा 2013 और 14 में मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि वो इससे 5 गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये मेरा ख्याल परवेज़ लोसर साहब भी कहेंगे और वाजिद भी। तो इंशाल्लाह अब कोशिश, लेकिन अगर हम सो जाएंगे तो फिर जाहिर है कि फिर दुश्मन जो है वो फतह कर लेगा, लेकिन अगर हम जागते रहेंगे, करेंगे मेहनत, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। नहीं, मैं अर्ज़ करूं कि जो भी मैं भी नहीं मैं अर्ज़ करूं कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का केस जो है पेश किया है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं और मैं जो फॉरेन ऑफिस के साथ मिलके हम जब वहाँ पर गए हैं तो हमारे एम्बेसडर जो हैं वहाँ पर वो हमारे साथ कैंपेन कर रहे थे, हमारे जो कमर्शियल अताशी हैं। तो ये एक टीम वर्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चूँकि मैं बरतानिया में मेंबर रहा हूँ पार्लियामेंट का, इस लिहाज से जब मैं वहाँ जाता हूँ, किसी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, चाहे वो अमेरिकन सेनेटर को भेजता हूँ, अमेरिकन कांग्रेस को भेजता हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को भेजता हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट को भेजता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे मीटिंग का टाइम मिल जाता है।
जो आम बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि परवेज़ लौसर साहब ने भी ये बात की, वाजे ने भी, कि 36 मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट से 2 दिन में मिलना जितना मर्ज़ी हो बहुत मुश्किल है। लोग मीटिंग नहीं देते हैं पार्लियामेंट में। हमारी पार्लियामेंट में जब इवन मुल्क के हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब मोस्ट पावरफुल जब था, उसका तोती बोलता था जब वो चीफ़ एग्जेक्टिव था, तो इवन उसका जो फंक्शन वहाँ पर हुआ था तो उसमें टोटल 12-13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जबकि पूरी एम्बेसी सब लोग कोशिश कर रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ तो 40-50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा नाम सुन के आ जाते हैं, इसलिए कि वो मेरे कॉलीग रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे तल्कात हैं। और दूसरा, मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नाउ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस। ये पर्सनल आपकी रिलेशनशिप्स आपको बनानी पड़ेंगी, पर्सनल तल्कात बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि जितनी भी मेरी पर्सनल रिलेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने कभी ज़िंदगी में उनको अपने ज़ाती मफाद के लिए, ये बड़े ढंके की चोट मैं कहता हूँ कि कभी इस्तेमाल नहीं किया। जब भी किया है कश्मीर के लिए किया है, पाकिस्तान के लिए किया है और पाकिस्तान के मफाद के लिए किया है। तो मैं आखिर में मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ही शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन यूरोपियन पार्लियामेंट। मैं आपको बिल्कुल, मैं चूँकि वहाँ गया हूँ, जितनी रिस्पेक्ट पार्लियामेंट में इनकी है शायद किसी मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट की होगी। और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, एक तो बता दिया वाजिद ने और परवेज़ लौसर साहब ने कि ही इज़ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आपको भी मालूम है कि लोग पार्टी टिकट पे लड़ते हैं। ये इंडिपेंडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इलेक्शन जीत के, इंडिपेंडेंट। सो वी हैव द राइट पर्सन नाउ ऑन आवर साइड। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि जो भी, तो इंशाल्लाह ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, ही इज़ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, मैं उन तमाम पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, जो असूलों की सियासत करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की सियासत करते हैं, मैं उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। इसलिए कि हमें फ़र्ज़ भी हमारा बनता है कि इंसान चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, ताकतवर है, कमज़ोर है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, सब के ह्यूमन राइट्स जो हैं एक जैसे होने चाहिए। एंड मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आई एम वेरी प्लीज टू से एंड प्राउड टू से कि पाकिस्तान में हमने करतारपुर कॉरिडोर, ओपन द करतारपुर कॉरिडोर इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज फॉर द सिख कम्युनिटी और minority communities, I can say have equal rights in my country. We take care of them and we celebrate their festivals as we celebrate our Eid festival. So thank you very much for your kind words, for your support for the Kashmiri people and for your support for GS people. Thank you. Thank you, Governor.